सोमनाथ महाराज जी का जीवन चरित्र है। इधर तुमने दौड़ गया। ये गांठ है। हो गया। ले आप खुला। ओपन। सोमनाथ महाराज से मुख्य शिष्य। ये क्रिस्टोफर सुजान ने बहुत मेहनत से इस बुक की रचना किया है, उन्होंने लिखा है और प्रेम ने उसका प्रिंटिंग करवाया है। Christopher and Suzanne have painstakingly written this autobiography, and it has been printed by Green Lincoln. ये क्योंकि बाबा सोमनाथ महाराज जी के शिष्यों में किसी ने बाबा जी के बारे में कुछ सोचा नहीं और उनकी याद धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन एक विदेशी प्रेमी सत्संगी ने जो उनकी याद में आज भी रहते हैं, हालांकि वो बाबा जी के पास 70 या 90 थोड़ा 70 या तो और एक साल पहले आए हुए थे। So Christopher ji and Suzanne ji, they have written this autobiography. The Indian devotees and Prerna ji and subsequent followers, none of them have taken the trouble of writing and keeping the memory of Somnath Babaji alive. And slowly people have forgotten all of that. Now it is an irony that it is a foreigner, Christopher, who has written this autobiography, and he's
his love comes out in this autobiography, and he is forever in the remembrance of Somnath Babaji. He has written this. हम तो सोमनाथ महाराज जी की शरण में 1974 में गए, लेकिन क्रिस्टोफर 4 साल पहले से वहां थे। I went to Somnath Babaji in 1974, but Christopher was there from 1970. He was almost 4 years before the time that I went there. और बाद में 74 में अप्रैल सावन सिंह महाराज भंडारा में हमें नामदान मिला, और 75 में बेरनार को नामदान मिला। So in 1974 I got initiation and in 1975 Bernard got initiated during the Savan Singh Ji Maharaj's Bernard. सेम। तब से हम दोनों की जो दोस्ती थी जैसे पहले थी, आज भी वैसे ही है। That way our friendship between me and Bernard, it was there from that time and it continues in the same way now also. और बेरनार और डोमिनिक की उस समय छोटी उम्र थी, 21-22 साल की थी, तो डोमिनिक की भी साड़ी पहन के दोनों बहुत सेवा करते थे, और रागी 600 क्विंटल होता था एक बार में, तो उसको ट्रैक्टर घुमाते थे। ये ट्रैक्टर का काम अच्छा करते थे। So Dominic also used to come. Both of them were very young, around 21 years old, and they would do a lot of seva. So in those days also we had the harvesting of ragi, and almost 600 quintals would be harvested, and then it would be spread in the hall. Now there is a hall there. It was open area that time, and then Bernard would drive the tractor to thresh that crop. रात भर, दिन भर, रात भर सेवा चलता था, खाली 2 घंटा सोते थे। तो रात को 1 बजे बाबा जी घी का लाडू बड़ा बड़ा बना के लेके आके जो रात को सेवा करते थे, 12 बजे सबको प्रसाद देते थे। So he would do this seva day and night and only sleep for 2 hours. The whole day that he would be doing seva. And Babaji would specially come at around 12 o'clock in the night, and he would bring big laddus of ghee, and he would give only those people who are doing all these night sevas and who are working very hard. तो बाबा जी के जीवन चरित्र के विषय में ये किताब लिखी गई है उनका, क्योंकि बाबा जी का जीवन चरित्र बहुत कठिनाई से बीता है। 25 साल उन्होंने प्राणायाम साधन किया नागपंथ में। So this is the autobiography of this great saint, and his life had been a very difficult. He faced a lot of difficulties, and he did a lot of austerities. Nearly 25 years he spent in very rigorous austerities in the Nagpanth. उस समय उनको रिद्धि सिद्धि थी, सब कुछ था, शांति नहीं, क्योंकि योगियों के मन बस में नहीं होते, क्योंकि मन भी ब्रह्म से आया है और योगी सर्वदल कमल तक ही जाते हैं, इसलिए मन बस में नहीं रहता। So though he had a lot of mystical powers and he was a yogi, but the mind was not in control, because the mind is the essence of Brahma. It comes from Brahma, which is of a higher plane. It is, and the yogis, when they do their austerities, they reach the plane of Sahasrari Kamal. So the mind pervades over the yogis. इसलिए महाराज को और भी आगे का गुरु चाहिए था। उन्होंने उत्तर भारत 3 साल पूरा हिमालय घूमा, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। जो कोई मिले उनसे कहीं नीचे वाले ही, खाली रिद्धि सिद्धि तक। तो बाद में ब्यास के रास्ते जा रहे थे, जब सावन सिंह महाराज मिले तब जाके सत्संग सुन के तसल्ली आई।
So he was in search of a master of a higher order because there was no peace of mind, though he had a lot of mystical powers. So he set out in search of the master, and he roamed most parts of North India. For nearly 3 years, he was in search, and only when he came at the feet of Savan Singh in Vyas, he listened to his satsang, and uh, that is what gave him his peace of mind. तो बाद में उन्होंने नामदान ले लिया। पहले ही प्राणायाम में उनकी रूह ब्रह्म स्थान तक पहुंची थी। आगे का गुरु मिल गया, रूह आगे चढ़ाई करने में कोई आतंक नहीं। और थोड़े ही दिन में बाबा जी ने आपको सत्संग करने का हुक्म दिया। So when he got the company of Savan Singh Ji Maharaj, he took initiation, and he was already an attained soul. He had reached the level of the Sahasrari Kamal, and for him then to do the practice and go further was not difficult. And shortly after that, Savan Singh Ji Maharaj told him to uh, do the teachings, carry on with the teachings of Sanpan. तो बाद में उन्होंने वहां पे 7 साल ब्यास में रहे, सेवा किया, और महाराज जी ने उनको भंडार का सेवा, राशन, लंगर को राशन देने का भंडारी का सेवा दिया था। So he stayed in the ashram for 7 years, and then he was doing seva. Savan Singh Ji Maharaj had given him the seva of being the storekeeper, so he was called the Bhandari there, and he used to give the ration and other things for the ashram. हाँ, बाद में महाराज ने आपसे कहा कि आपको दक्षिण प्रांत की भाषा आती है, आप वहां जाकर के संत मत का प्रचार करो, लेकिन पहले जैसे मांगना नहीं, मेहनत करके कमाई करके खाना, सत्संग चलाना। So, since he had come from the southern parts of India, Savan Singh Ji Maharaj told him that since you know the language and the ways of the South Indian states, you go to the south of India and then you do the teachings. But unlike your stay and behavior as a yogi, where you used to ask for alms and continue to live, here you should make your own living and only then give and impart your teachings. तो बाबा जी उनका हुक्म मान के पहले बॉम्बे आए, और बॉम्बे में उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, और वहां आकर के उनको कोई नौकरी तो मिल नहीं रही थी, लेकिन बाबा जी का शरीर बहुत हट्टा कट्टा था। तो आप एक टोकरी लेके भूजा हुआ चना पेट पे बांध के और उसमें एक गरम मट्टी का बर्तन, हांडी रख के और 5 पैसा 10 पैसे में बेचते थे। So from the ashram, Baba Somnath ji came to Mumbai, and there was no job here. So, but he had a very fit body, and what he did was he used to sell grams, at the seaside. The people carry the grams in a small basket, and they carry the basket on their stomach, tied to their back, and that the gram is heated and then offered. So he used to sell that for 5 paise, 10 paise, like that. तो इस तरह से करते करते महाराज की कृपा थी, एक कपड़े का दुकान ले लिया। 8 साल तो मिल में काम किया, बाद में कपड़े का दुकान लिया, और वहां बैठे वो महाराज की कृपा थी, बढ़ते गया। 3 दुकान का एक दुकान बनाया, और उसमें काफी होलसेल व्यापार, बिजनेस कपड़े का रखा। So that way he started, and later he got a job in the mill, and it was the grace of Saman Singh Ji Maharaj that soon he purchased the shop, and like that over a short period of time he had 3 shops, and he combined the 3 shops into one wholesale shop, and he would give satsangs in the evening, and gradually his all this increased substantially. और बॉम्बे की संगत
जो भी वहां आती थी सत्संग सुन करके आकर्षित होते तो ले जाके ब्यास में सबको नाम दिलाते थे। So a lot of people would come in from Mumbai to listen to his discourse, and when they would seek initiation, he would take the groups to the ashram, ashram in Bias, and get them initiated there. तो उनका चरित्र तो बहुत काफी है। अब आपको थोड़ा उनके बारे में जानकारी दी गई। बाबा अजैब सिंह महाराज जी का जीवन चरित्र और बाबा सोमनाथ महाराज जी का जीवन चरित्र दोनों का एक ही जैसा है। दोनों का बहुत तपस्यापूर्ण जीवन रहा है। So that way, he had a great life. I have explained in a very short way, but he had a great life with a lot of austerity done. His life and Santji's lives were quite similar. Both of them spent a lot of years of their lives doing austerities and in the search of God Almighty. कबीर गुरु की भक्ति करूं तज विषयारथ जोज। कबीर गुरु की भक्ति करूं तज विषयारथ जोज। बार बार नहीं पाएंगे मानुष जन्म की मौज। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की बाणी है। This is the Bani of Kabir Sahib. कबीर साहब जी इस बाणी में भक्ति की महिमा का बयान किया है। In this Bani, Kabir Sahib has talked about the greatness of devotion. क्योंकि रास्ते बहुत हैं भक्ति के, प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास, बहुत सारे रास्ते, अष्टांग योग, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उनमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। So Kabir Sahib speaks of the greatness of devotion. That way, there are many paths of devotion. There are many ways to do devotion. There are pranayams, there are ashtang yog, there is jap tap, then puja, or going on pilgrimages. So there are several ways to do the devotion, but the devotion of the highest order is this path which Kabir Sahib talks about. भक्ति का मतलब पीला कपड़ा रुद्राक्ष नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाके उपवास मरने की जरूरत नहीं, कहते अपने दुनिया में रहना, बाल बच्चे में रहना, लेकिन जो भी गुरु ने नाम दिया है उस नाम का रूप हो जाना या मालिक का रूप हो जाना और दुनियावी कारोबार करना, ये सच्ची भक्ति है। So he explains that to do devotion, one does not have to do austerities, one does not have to sacrifice the comfort of his home and his family and go in the jungles or in the mountains or do other such practices. The path of devotion, the correct path of devotion is where within all of this one identifies himself with his master, with God Almighty, and he stays connected to God Almighty and connected to his master while he stays in the routine of his life. तो वही कबीर साहब इशारा देते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चौज, बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। कहते हैं कि विषय वासनाओं से और दुनियाओं के मोह से और भी अपने मन को हटाओ और सच्ची गुरु की भक्ति, सच्ची भक्ति करो। So Kabir Sahib says that
you do your devotion and you control your mind and don't let it get carried away by the vices and by the desires of outward pulls and by all your attachments and everything that you desire outwardly. You control your mind and with a true heart you do your meditation and have the love and affection of God Almighty. गुरु की भक्ति का मतलब गुरु का फोटो रख के हार चढ़ाना, अगरबत्ती सवेरे नहा के अगरबत्ती चढ़ा देना, फूल हार चढ़ाना और पूजा करना। कहते हैं कि संत मत में फोटो का पूजा निषेध है। So devotion is one does not have to do uh, as we understand to put incense or to take flowers and put it in front of the photograph of the masters. All these things are not allowed or they are asked. One has to refrain from all of these kind of practices because praying to the photograph of the master is something that in Santmat is disallowed. कहते हैं संत मत के अंदर गुरु की पूजा, जो संतों ने रास्ता बताया, रोज रोज सत्संग सुनना, रोज रोज भजन सुमरन करना, मिले तो सेवा, ये तीन ही रास्ते हैं संतों को खुश करने के। कहते इन तीनों में रहे, रोज रोज सुमरन के रंग में रंगा रहे, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। So the true way to do devotion and please your master is to do your bhajan simran daily, to listen to satsang on a daily basis, and if possible to do seva. By doing these things, one gets the pleasure of the masters, and that these are the three simple things that the path asks us to do as for our devotion. कहते भजन सुमरन करके अपनी रूह को ये 9 दरवाजे से निकाल के 10वें में लेके आना। जब ये तीसरी आंख खुल जाती है तो गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लेना, और जब गुरु प्रकट हो जाता है तो गुरु भक्ति पूरा होती है। So by devotion we have to withdraw from the 9 doors. When we do our bhajan simran, we withdraw the attention of the soul from the 9 doors and come to the 10th door. And there, when we open the third eye or the 10th door, we manifest the radiant form of the master within. And that is where we can say we are successful in our Guru Bhakti or in the devotion of our master. जब गुरु भक्ति पूरी होती है तो आगे नाम भक्ति। नाम भक्ति का मतलब सुमरन और कुछ नहीं, अंदर गुरु की कृपा से शब्द प्रकट हो जाता है और शब्द सुनते रहना, गुरु का दर्शन करते रहना, आपकी सफाई होते रहती है, आपकी रूह ऊपर चढ़ाई करते जाती है। सुमरन कोर्स खाली यहाँ से नीचे जब तक शरीर में है, और जब रूह अंदर चली जाती सूक्ष्म शरीर में तो सुमरन का कोर्स खत्म हो जाता है, खाली ध्यान धुन, उसी को नाम भक्ति कहते हैं। So the devotion of the master or Guru Bhakti is up to the attention that is focused and manifestation of the form of the master within. When we leave the 9 doors, come to the 10th door and manifest the master within, our course of doing Guru Bhakti or devotion of the master comes to an end. After that, we don't have to do our bhajan simran. It is with the grace of the master, he gets the soul connected with the holy sound current. And then we have to only focus on the sound current, listen to the sound current, and contemplate on the form of the master. And that way, all our past karmas, all the burden of karmas slowly keeps getting redeemed on its own with the grace of the sound current and the master. So that is called Nam Bhakti. Guru Bhakti is only up to coming to the 10th door by doing the bhajan simran told to us by the masters. और
जब अंदर में वो शब्द प्रकट होता है तो शब्द ही हमें ऊपर लेके जाता है, और गुरु हर मंडल में साथ होते हैं, और सिख और गुरु वो शब्द के जरिए ऊपर चढ़ाई करते हैं और पार ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, जिसको मुक्ति पद कहते हैं, तीसरा मुक्ति पद। So the holy sound current takes the soul further up, and at each level the master is always there with the soul, and then the sound current takes the soul to the mukti path, or the place of salvation, which is par brahm, which is beyond these three realms, the physical, astral and causal. वहां जाकर के आत्मा अमृतसर मानसरोवर में स्नान करके निर्मल हो जाती है और अपने सच्चे रूप में निखर आती है। वहां न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, शरीर का भेद खत्म हो जाता है और आत्मा अपने असली रूप शब्द और प्रकाश रूप में आ जाती है। So once the soul crosses the par brahm, the master makes it take a holy dip in the holy Mansarovar, and after the soul takes a dip in the holy Mansarovar, it casts away the outer coverings of the physical, astral and causal bodies that it carries, and it comes in its essence, and after taking the dip in that holy Mansarovar. वहां पे आत्मा निर्मल हो जाता है, शब्द और प्रकाश रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका असली रूप बाहर आ जाता है और आत्मा से 12 सूर्य का प्रकाश बाहर निकलने लगता है। So once it has taken that holy dip in the Mansarovar, it comes into its true essence, which is that of light and sound. It comes in the form of light and sound, and all the outer coverings of the bodies it carries, all of that is cast away. इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर, कि तुम गुरु की भक्ति करो। हाँ, लेकिन हमारे लोगों को शंका होती है कि क्यों कबीर साहब गुरु की भक्ति के बारे में कहते हैं, देवी देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, उनकी भक्ति के बारे में क्यों नहीं कहते? So Kabir Sahib tells us, therefore, you do the devotion of your masters. But then we have doubt that why is Kabir Sahib telling us to do devotion of the master? Why doesn't he ask us to do devotion of the gods and goddesses of the higher planes? क्योंकि महात्मा कहते हैं, क्योंकि हम इन देवी देवताओं को देखा नहीं, वो कैसे हैं, खाली फोटो में देखे हुए हैं। तो फोटो बनाने वाले बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फोटो बनाते हैं कि लोग आकर्षित हों। तो सच्चे देव देवी को तो हमने देखा नहीं, तो उनका ध्यान कैसे कर सकते हैं? लेकिन गुरु को हम देखते हैं, वो सामने बैठ के ही हमें दर्शन देता है, नाम दान देता है, सत्संग सुनाता है। जिसको हम देखते हैं उसका ध्यान कर सकते हैं। That is because we have not seen these gods and goddesses, and what we have not seen we cannot contemplate. Though outwardly we have seen photographs of gods and goddesses or deities, but these are all artistic images or artistic impressions of the artisans who have created them. We have not seen the real gods and goddesses, and therefore we are not able to contemplate upon them. Whereas in the case of our masters, we see them talking in front of us, we see them sitting and standing in front of us. So we can easily contemplate on the form of the masters. And once we can contemplate on the form of the masters, we can go within and manifest that form which we have seen. अगर गुरु के कृपा से हम 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएं, हमारी तीसरी ज्ञान की आंखें खुल जाएं, तो हम अपने अंदर में असली देवी देवताओं को देख सकते हैं। When with the teachings of the master we are able to go within, leave these 9 doors and we come to the 10th door, there we can see for ourselves the real gods and goddesses which are all within us. और वो देवी देवता अपने 6 चक्र के अंदर मौजूद हैं। नाभि स्थान में विष्णु और लक्ष्मी दिखाई देते हैं, हृदय स्थान में शिव पार्वती नजर आते हैं, कंठ स्थान में दुर्गा
हाँ, कहते हैं कि इन तीनों की माँ वो ऊपर कंठस्थान में बैठी है, ये सब नजर आते हैं। So when we reach the 10th door, we can see all of these gods and goddesses within. At the level, we have 6 chakras below, and all the gods and goddesses are contained within that. So we can see for ourselves the Lord Vishnu and Lakshmi in the navel chakra, and at the chakra of the heart, we can see Shiv and Parvati, and like that at the level of our throat, we can see Durga. तो ये सब अपने अंदर में है। अंदर में अगर हम जाएंगे तो सच्चे देवी देवता को हम देख सकते हैं कि जैसे वो हैं, लेकिन बाहरी दृष्टि से हम वो सच्चाई को नहीं देख सकते। So when we go within, we can actually see the true form of these gods and goddesses. And from these outward eyes, we cannot see that. And until we go within, we will not be able to see the real forms. लेकिन बगैर गुरु के कृपा के हम अंदर जा ही नहीं सकते। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि गुरु की भक्ति कर। And we will not be able to see them till we go within. And to go within, it can only be with the devotion of our master. That is why Kabir Sahib says, do your devotion of the master and go within. भक्ति बीज बिन से नहीं आई पड़े जो चोर, भक्ति बीज बिन से नहीं आई पड़े जो चोर, कंचन जो बीता पड़े घटे को मूल। फिर कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि जो भी भक्ति हमारे अंदर पैदा होती है, अगर हम जो भक्ति करते हैं वो कभी नाश नहीं होता और वो भक्ति का फल हमें जरूर मिलता है। तो कहते हैं भक्ति ऐसी है जैसे एक सोना कहीं कीचड़ में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती है। उसको अच्छी तरह से धो के बेचने वाला और मामूली कीमत पे ही बेचेगा। So Kabir Sahib says that whatever devotion we do, it is never going to be lost. It will always be with us, and we will always have the credit of that devotion. So however little or much devotion we do, it is always going to be with us. He compares it with gold, and he says that if gold falls in filth or it falls in the mud, it doesn't lose its value. Whoever picks that gold up and washes it will still get the same value of that gold. तो कहते हैं देखो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि ने राम पैदा होने के 10,000 बरस पहले ही रामायण लिख के रख दिया था, वो भी संस्कृत में, कि इस तरह से पंपापति सरोवर पे राम लक्ष्मण आएंगे, ऋषियों मुनियों को दर्शन देंगे। तो वहां बहुत सारे ऋषि मुनि और जो है पढ़ के जाके वहां आश्रम बना के रहते थे कि राम के दर्शन होंगे। वहीं एक गरीब नीच जात भिल्लनी शिवरी जिसकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी, तो वो भी सोचा हम भी रहेंगे तो हमें भी राम का दर्शन होगा। इन ऋषियों मुनियों से दूर जाके एक पेड़ के नीचे छोटी झोपड़ी बना के और शिवरी भी वहीं रहने लगे। In Valmiki wrote the Ramayana, the epic Ramayana. It was written 10,000 years before Lord Rama was born in this world, or before he was incarnated here. And reading his reading his epic, a lot of the sages, they went and started staying at a place called Pampavati Sarovar, Lake Pampavati, where in his book he had said that on such and such a date Lord Rama will visit this place. So people thousands of years before started inhabiting that lake and waiting, sat there in wait of Lord Rama to come there.
and there was this poor lady, Shibri. She was a very humble and poor lady, and she also wanted to meet Lord Rama. So she also made a small hut and started staying there. तो बहुत सारे ऋषि मुनि जाके आश्रम बना के रहते थे, पंपापति में स्नान करते, कपड़ा धोते, लेकिन वो पंपापति का पानी पीने काम में नहीं आता था, तो दूर से पानी उठा के पहाड़ों से लाना पड़ता था। तो कहते हैं कि यही ध्यान में थे कि राम आएंगे तो दर्शन मिलेगा। So all these great rishis and munis, they started staying there, and this lake Pampavati, the water was impure. There were a lot of infestations in that lake, and for drinking purposes, they had to bring the water from the mountains. So it was quite difficult. But they continued to stay there, hoping that they would get to meet Lord Rama. तो कहते हैं कि वो समय आया जब राम लक्ष्मण पंपापति सरोवर में आए, तो जो वहां पे ऋषि मुनि अपने झोपड़ी बना के दर्शन के लिए बैठे थे और तपस्वी थे, ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, और उनके अंदर अहंकार था कि हम बड़े महात्मा हैं, राम आएंगे तो मेरी कुटिया में आएंगे, दूसरा कहता है मेरी कुटिया में आएंगे, तो ऐसे ऐसे अहंकार अंदर था। So all these were great rishis and munis, and they had done a lot of austerities, and some of them were attained souls, but all of them had this ego that I have done so much austerity, so when Lord Rama comes, he will first come into my house or my dwelling. So like that, these people had all egos about the austerities that they had performed, but they were waiting for that destined day on which Lord Rama would visit. और शिवरी भी राम के दर्शन के लिए लालायित थे कि राम कब आएंगे, और सब बैर जो पग के नीचे गिरते लेके आती और उसको चख के देख लेती, कहीं कड़वा तो नहीं है, कीड़े तो नहीं है, अच्छा वाला रख लेती, कीड़े वाला फेंक देती। तो सब चखा हुआ बैर लेके बैठी थी और सोचती थी राम कब आएंगे कब आएंगे। वो समय आ गया कि राम आए। So just like all of them were in wait of Lord Rama to come, Shibri also was waiting for Lord Rama, and she was also hoping that Lord Rama would visit her. And since she did not have any other thing, she used to collect these berries, and these berries which would fall from the trees, she collected these berries, and then she would taste the berries to make sure that the berry is not sour or there are no insects in it. So that way she would taste each and every berry, and only those which were sweet she would keep aside. So that way she had collected a basket of berries, hoping that Ram would come to her hut and visit her, and she could offer them to him. क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होगी उनके अंदर सेवा भाव भी होगा। तो सेबरी रात रात को 12 बजे के बाद उठ के जाके ऋषियों मुनियों के दरवाजे के सामने झाड़ू लगा के आती थी, और पंपापति स्नान के लिए जाने का झरना लेक के पास वो भी साफ करके आते। Wherever there is devotion, there is also a lot of humility, and there is this feeling of doing seva. So Shibri would also make out time to clean the pathways of these great rishis and rishis who would visit the Pampavati lake. So those pathways she would keep clean. तो कहते हैं कि उसकी सेवा देख के इन ऋषियों मुनियों में एक मातंग ऋषि थे जिनकी उम्र 100 के ऊपर थी। तो उन्होंने सोचा कौन है जब सब सोते हैं और वो सेवा करता है, तो उसको पकड़ के लेके आओ। तो उनके शिष्य अंधेरे में खड़े थे, और जब सेवरी झाड़ू लगाने लगी आवाज आया तो बाहर निकल के सेवरी को बोले कि हमारे महाराज बुला रहे।
So amongst these rishis and munis, there was Mahatang Rishi, and he was quite aged. He was more than 100 years, and he observed that somebody was cleaning the pathways every day, and that person was not coming in front. So he wanted to find out who is that person who is doing the seva, and he asked two of his disciples to hide and wait and see who is doing the cleaning. And accordingly, when Shibri came out to clean the pathway and with her broom, when she came out, these two disciples they came to her. तो सेवरी कांपने लगी कि ऋषि सामने आ गए, ना मालूम क्या श्राप देंगे। और डरते डरते मातंग ऋषि के पास गई, कांप रही थी। तो मातंग ऋषि उसका हालत देख के कहते हैं, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। So when she saw these two rishis come towards her, she got very scared, thinking that they may curse her, as she was of a lower caste. So they took her to Mahatang Rishi, and when she was trembling in front of him, thinking that he will curse her now, he saw her trembling and he told her that don't worry, I've not called you to curse you. I want to give you a boon. तो बाद में कहते हैं, तुम्हें उपदेश मिला है? तो कहती है, नहीं, मैं तो ऐसे ही राम राम कहती हूँ। तो बोले, अच्छा बैठो। तो बैठे तो उन्होंने उन्हें उपदेश दे दिया, वही राम का जाप ही उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि बेटी अगर राम आएंगे तो पहले तेरी कुटिया में आएंगे। So then he asked her whether she was initiated, and she told him that no, she did not have any initiation, but she would just repeat the name of Lord Rama. So he made her sit and he gave her initiation of the name of Lord Rama only, but he initiated her, and then he blessed her, saying that when Lord Rama will come here, he will visit your hut first. तो जब राम आए, ऋषि मुनि अपने अपने दरवाजे पे खड़े थे अहंकार के नशे में। राम ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और राम लक्ष्मण चलते गए और सीधा सेवरी के झोपड़ी के पास जाके खड़े हो गए। So when Lord Rama and Lakshman came to that place, all these rishis and munis, they were standing by their houses, hoping that Lord Rama would visit their place. But they all had their egos, and Lord Rama and Lakshman, they did not see or look to any one of them. Instead, they just walked straight to the hut of Shibri. तो कहते हैं कि क्योंकि सेवरी के अंदर सच्ची भक्ति होने से राम सेवरी के घर गए, सेवरी ने उनके चरण धोए, ले जाके अंदर बिठाया और वो जूठे बेर ला के टोकरी में सामने रख दिया। अब राम बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कुछ लक्ष्मण को भी दिया तो लक्ष्मण गुस्से में बाहर निकल के फेंक दिया। So when Lord Rama and Lakshman, they went to her hut, she washed their feet and she invited them inside the hut. And when they sat down inside, she offered them that basket of berries which she had kept preserved for them. And looking at her devotion and love, Lord Rama started eating those berries, and he offered them to Lakshman also. But Lakshman got annoyed because he saw that the berries had been already tasted and she had already eaten some of them. So in annoyance, he took the berries and threw them outside. इधर क्या हुआ, ऋषि मुनि लोग सोचे कि ये अगर राम लक्ष्मण होते तो हमारे जैसे घर में आना था, एक नीच जात की झोपड़ी में क्यों जाते, ये अवतार नहीं है, ऐसा वैसा मन में संकल्प आने लगा, मीटिंग करने लगे। So when the other rishis and munis saw that Lord Rama has gone to this hut of this low caste lady, they felt that maybe he is not an incarnate, maybe he is not really God, and because he has gone into this home of this low caste lady.
So that way they started getting all these thoughts in their mind, and they all got together thinking about this. फिर सोचे अगर अवतारों में ऐसे ही चले जाएं तो हम लोग इतना दिन से दर्शन के लिए बैठे थे, चलो परीक्षा लेंगे। So when they all put their minds together, they felt that if they ignore Lord Rama also, it will not be correct, because after all they have been waiting so many years for him to visit, and indeed if he is really incarnate, then they will miss the opportunity. So they felt that they should test him, and they decided to do a test. तो बाद में सब लोग मिलके आए, युग युग के देखते हैं कि सेवरी जूठे बैर दे रही है, राम खा रहे हैं, तो और भी अभाव आ गया। फिर भी पूछते हैं कि चलो परीक्षा लेंगे, तो लोग झुक झुक के आके राम के सामने खड़े हो गए, कहते महाराज पंपापति सरोवर का पानी नहाने धोने के काम में आता है, पीने के काम में नहीं आता। आप पार ब्रह्म के अवतार हैं, अगर चरण धो के पानी दे दे तो हम उसमें डाल देंगे, वो निर्मल हो जाएगा। So they started coming and taking a peek inside the hut, and when they saw that Lord Rama was eating the berries half eaten by her, they even had more, they felt even more disgusted. But however, they all came and they requested Lord Rama that this lake of Pampavati, the water is impure, and though it comes handy for washing clothes and utensils, we cannot drink this water because it is infested. So if you can help us cleanse it. तो राम ने कहा आपसे बड़ा कौन है, आप 10,000 साल से, आप 8,000 साल से तपस्या कर रहे हैं, आप अपने चरण धो के डाल दो, निर्मल हो जाएगा। So Lord Rama, they said that you have come from, you are an incarnate from above Parbrahm. So if you can cleanse the water, that will help us, and it will rid us of a lot of hardship. So he told them that all of you have been doing such difficult austerities for 8,000 years, for 10,000 years. So why don't you just wash your feet, and with that water, you pour that water in the lake, and it should get cleaned on its own. तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ हो सकता है, अहंकार के नशे में हो गए, सब अपना अपना पैर धो के पानी डालते हैं, तो जब सबके पैर का पानी अंदर गया तो कीड़े और बढ़ गए। So then all those rishis munis felt that indeed that may be so, because they have been doing those austerities. Perhaps the water from their feet will cleanse the lake. So all of them started washing their feet in the lake and putting water inside the lake. Now when they did that, the insects and the infestation increased in the lake. तो बाद में भाग के आए, कहते महाराज और कीड़े ही बढ़ गए, गंदा हो गया। तो राम कहते हैं कि अगर ये सेवरी अपना पैर धो के डाल दे तो निर्मल हो सकता है। So then they came back to Lord Rama and told him that the insects have increased in the lake after we have put the water of our feet. So Lord Rama told them that perhaps Shibri can wash her feet and put that water, maybe it will get cleaned with that. तो सेवरी से राम कहते हैं कि माता तू जा, तू अपने पैर धो के डाल दे और निर्मल हो जाएगा। सेवरी कहते नहीं महाराज, मैं हाथ लगाऊं तो इनके काम में आने वाला नहीं, मैं चरण धो के पानी डालूंगे, कैसे पिएंगे, नहीं माता तू जा। So Lord Rama requested Shibri to wash her feet in that lake, but then she was very scared because she felt that since she was of a lower caste, even if she touched the water, it would be of no use to these rishis munis. So where is the question of washing her feet in the water that they will be drinking? But he requested her, and he said, no, you please do that. तो राम हुकुम मान के सेवरी जाती है और डर के मारे आधा बाधा पैर धो के ऐसा फेंक के आती है, तो जैसे सेवरी के चरण का पानी तालाब में पड़ा तो सारा तालाब का पानी साफ सुथरा हो गया और वो कीड़े नामालूम कहाँ चले गए। So she was very scared, but she had to obey the
instructions of Lord Rama. So she went there and somehow took a little water from her feet and put it. She poured a little water into that lake. As soon as the water with which she had washed her feet went inside the lake, the insects which were there and all that infestation which was there suddenly vanished and the water became very pure. तो कहते हैं कि इस तरह से राम 3 दिन तक थे शिवरी के घर में, झोपड़ी में, और बाद में उससे जाने की जो है कि मांगे कि माता मैं यहाँ रहूंगा, मेरा काम कैसे होगा, मुझे अब जाने दे, छुट्टी दे. So Lord Rama stayed in her hut, in Shibri's hut for 3 days, and then he requested her that he had to move on because there was a lot of other work pending, so he could not continue to stay. So he took her. He asked for her to allow him to leave her hut. हाँ, तो उसने राम को रोक नहीं सकी, जाने के लिए हुक्म तो दे दिया, लेकिन वो वियोग नहीं सहन कर सकी. जैसे राम ने झोपड़ी के से बाहर कदम रखा और शिवरी अंदर गिर गई और प्राण त्याग दिए. So she could not stop him, so she had to allow him to leave. But she was so much in devotion of him that the moment he stepped out of her hut, she passed away inside. तो कहते हैं कि ये भक्ति है. हाँ, भक्ति में दिखावट नहीं, आडंबर नहीं और कोई पहनावा नहीं. भक्ति भगवत का रूप हो जाना ही और बाल बच्चे में रहना ही सच्ची भक्ति. So this is the true devotion. Devotion is not about outward appearances or showing others. It is about being lost in that love and affection of our masters within, and to remain in the routine of our lives and in our surroundings, but within to be forever in his contemplation. क्योंकि ऋषि मुनि बहुत सारे तपस्वी थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार था, भक्ति नहीं. शिवरी के अंदर अहंकार नहीं, दीनता नम्रता था, भक्ति थी. तो इसलिए राम शिवरी के घर गए तो परमात्मा को भक्ति प्यारी है. So if we see the Lord, the rishis and munis, they had a lot of outward appearances, but they had a lot of ego. Whereas Shibri did not have any ego and she had only love and affection. So therefore he went to her instead of going to the others. संत मत ये भी भक्ति का ही रास्ता है. गुरुमत सिद्धांत भक्ति के ही रास्ते हैं. इसमें आडंबर और दिखावट नहीं है. गुरु का रंग में रंग जाना ही गुरु को पाने का एक सच्चा तरीका है. So even Santmat, and Santmat is a path of devotion. It is a path of love and affection towards the master. There is nothing to show around or have any outward appearances in this path. It is all about having that deep inward love and affection towards the master. सच्ची भक्ति करके जब तक हम गुरु को अंदर प्रकट नहीं कर लेते, तब तक हमारी भक्ति, गुरु भक्ति पूरी नहीं होती. So till we do not inculcate that deep love and affection towards the master and the devotion of the master, we will not be able to go within and fulfill that first stage of the Guru Bhakti or the devotion of the master. जब हम अंदर जाते हैं, गुरु प्रकट हो जाते हैं, तो हमारी गुरु भक्ति पूरी हो गई और वहां से हमारी नाम रूपी नौका जो है कि वो शब्द के समुद्र में चलने लगती है, क्योंकि अंबिका खेवटिया गुरु है. So once we have done that devotion of the master, we have done our Guru Bhakti, we have manifested his radiant form within. We go to the 10th door, and once we go inside, our boat of Naam gets started, and that boat of Naam then rides in the sea and the current of Naam. The boatsman is the master, and the boat of Naam
on which our soul rides. It rides the current of the holy sound current. अभी तो हम नाम रूपी नौका में बैठे हैं, लेकिन वो अंबिका नहीं है, केवल माने नाव चलाने वाला वहाँ कोई नहीं। So even now we are sitting in that boat of Naam. We are all sitting inside, but we have not manifested that boatsman. That master is not there. So we are just sitting in the boat. तो जब तक गुरु अंदर प्रकट नहीं होते हैं तो हमारी नाम रूपी नौका खड़ी रहेगी। अब वो प्रकट हो गए तो वहां से स्टार्ट हो जाती, ऊपर चढ़ाई करते। So only when we manifest his radiant form, that boatsman appears, and then our boat starts moving on that current, the holy sound current. Otherwise, it is stationary now. खाली नाम लेने से हमारा उद्धार नहीं होगा। नाम आपको रास्ता बताया गया है, जब तक आप उस रास्ते पे चल के गुरु को अंदर प्रकट नहीं करेंगे तब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी। So just because you have been initiated, it does not mean you have got your salvation. Initiation is a path. The Santmat is a path on which you have been initiated, but you have to actually walk the path. So till you do not walk the path, you will not get salvation. तो अभी बहुत जरूरी है कि गुरु को खुश करना, गुरु को अंदर प्रकट करना, और जब तक गुरु अंदर प्रकट नहीं होता है तब तक हमारा काम, हम इस भक्ति में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। So our work is to get the happiness of the master, and we get the happiness of the master when we manifest him within. So until such time we cannot say that we are successful in our devotion. इसीलिए कबीर साहब ने इस वाणी में पहले ही कहा है, कबीर गुरु की भक्ति कर। पहले गुरु की भक्ति करो, गुरु को अंदर प्रकट करो, वो सच्ची भक्ति है। So Kabir Sahib therefore says that first of all you do your devotion of your master, and that means you should manifest the radiant form of the master within. That is the true devotion. क्योंकि हम परमात्मा के अंदर परमात्मा को अपने आप नहीं पा सकते, जरिया गुरु होता है, और जब तक गुरु प्रकट नहीं होगा हम ऊपर नहीं जा सकते और परमात्मा से नहीं मिल सकते। So we will not be able to manifest God Almighty, because in order to manifest God Almighty we need the help of the master, and it is the master who will take us to God Almighty and manifest him for us. So till we first manifest the master, we will not be able to go towards God Almighty. तो इसीलिए चाहिए जो गुरु कहता है उस पर अमल करें, और हम अपने अंदर गुरु को प्रकट करने की कोशिश करें कि जिससे हमें मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाए। So therefore it is our duty to do that devotion. The teachings that have been given by the master, we have to follow that, and that is how we will be able to achieve the true purpose of coming in this human form. हम रात दिन दुनियादारी में के बारे में सोच के और दुनिया के रंग में रंग के हम आधा घंटा घंटा बैठ के कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। By doing just outwardly meditation for just about half an hour or so, we will not be able to get success, because we are so much imbued in the colors of this world that by doing such minuscule meditation we will not be able to go within. हमें सच्चाई को समझना चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है। हाँ, कहते हैं मरना सच है, जीना झूठ है। हम जीना सच मान लिए, मरने को झूठ मान लिए, लेकिन जीना झूठ है और मरना सच है। We have to understand the truth. We have to understand what is truth and what is false. What we do now is we believe that this living, we are living, that is the truth, and death is false.
but the reality is death is truth and the living is false. So we have to be able to discern and understand this reality. कहते हैं मरने को समीप देखना, आज हैं कल रहेंगे क्या नहीं। अगर मृत्यु का डर होगा, हमारे अंदर गुरु के प्रति सच्चा भाव यानी प्रेम होगा, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। So we have to understand this reality, that of the impermanence of this life and the reality of death. And when we understand and keep that above all, we will be able to do that devotion and we will be able to work towards it. तो इसीलिए मृत्यु को सामने देखे, हर सिर पे वो काल बैठा है, ना मालूम कब हम सबके बाल उसके हाथों में हैं, ना मालूम कब वो उठा ले। तो कहते हैं इस तरह से मृत्यु का डर और गुरु के ऊपर सच्चा विश्वास और प्रेम, ये दो होगा तो भक्ति बढ़ेगा। क्योंकि पक्षी के दो पंख होते हैं, दोनों बराबर होंगे तो पक्षी उड़ेगा। So we have to have the fear of death. We should understand the reality and have that fear of death. We should understand that Kal is sitting on our head and he can bring an end to this life at any time. And we should not forget that. We should be mindful of that reality. And the other is that we should have faith in the Master. Just like a bird to fly needs two wings. One wing, when both the wings are balanced, only then it will be able to fly. Like that, the wings of devotion will require two things. One is the fear of death, and that will keep us forever attuned to devotion. And the other is the faith in our Master. So we should have faith in our Master, and we should be fearful of the reality of death. तो इसीलिए दुनिया झूठी है और नाम सच है, गुरु सच है, आत्मा सच है। तो हमें झूठे से अपने प्रेम प्यार हटा लेना, नाम के साथ जोड़ देना या गुरु के चरणों के साथ जोड़ देना, दुनिया भी कारोबार करना गुरु का होके करना चाहिए। Like that, we should remember that all these outwardly things, all the materiality of this world, our attachments here, all that is false. What is true is our soul and the Master and Nam. So we have to remember that the devotion of this and the devotion towards our Master is the truth, and the attachments towards this world are false. So we should always again be mindful and discerning about this truth. We should refrain or keep ourselves aloof from this attachment of the world and keep it entangled with our Master. हमें अपने घर जाने की चिंता होनी चाहिए। हमारा घर कहाँ है? सतलोक सचखंड में है। अपना पिता कहाँ है? सतलोक सचखंड में है। हमें उस घर की चिंता होनी चाहिए, यहाँ की चिंता नहीं होनी चाहिए। So we should be worried about our true home. Our true home is Sachkhand. Our true Father is God Almighty. So we should be concerned about going back to our true home and going back to God Almighty. कहते हैं आप आत्मा हो, परमात्मा के बेटे हो, सतलोक सचखंड के रहने वाले हो। आप दुनिया को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। You are the essence of God Almighty. You are the son of God Almighty. And in this world, you are someone and you have the power to give to this world. You are not a person who has to take from this world, but to give to this world. तो कहते हैं लेकिन हम अपने आप को शरीर समझ बैठे, दुनिया के सामान को अपना बना बैठे और आज अपने आप को भूल गए। But we have forgotten that, and instead we have identified ourselves with this body, and we have identified ourselves with all the manifestations of this world outside, and we have forgotten our true power. हम भूल गए कि जब हम पैदा हुए खाली हाथ आए हैं और जब जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। जो भी गए ना कुछ
लेके गए, आगे जो भी जाएंगे ना कुछ लेके जाएंगे। We have forgotten that when we came into this world, we came empty handed. And when we leave this world, we are again going to leave it empty handed. So we have not brought anything in this world and we are not going to take anything from here. इसीलिए अच्छी तरह से विचार करके अपना प्रेम प्यार दुनिया से हटाएं, सदगुरु के चरणों से जोड़ें, गुरु का बन के दुनियावी कारोबार करें। Therefore, be very discerning about this reality and take out your love and affection which you have for this world and put it at the feet of your master. दुनिया का बनोगे, धोखा खाओगे, दुनिया झूठी है और आपको दुनिया छोड़ के जाने के समय बड़ा दर्द होएगा। So be mindful that all your love and affection which is for the world outside is only temporary, and when you leave the world you will have to leave all of this behind. क्योंकि हमने दुनिया से प्रेम प्यार किया है और उस प्रेम प्यार की चीजें जिसके ऊपर प्रेम किया उसको छोड़ के जाने में दर्द होता ही है। Because we have our love and affection for all the worldly things, whatever we have love and affection for, when we leave that or we have to depart from that, it always causes sorrow. वही ले लो। भक्ति बीज बिन से नहीं, आई पड़े जो झोल। भक्ति बीज बिन से नहीं, आई पड़े जो झोल। कंचन जो बीता पड़े, घटे न ताको मोल। राधा प्रोग्राम के बारे में कुछ, क्या बाबू? प्रोग्राम के बारे में बोलना पड़े, जैसे प्रोग्राम के हाँ सवेरे बोल दिया ना। हाँ, सुबह बोल दिया। हाँ ठीक है। हाँ